Hello, Assalamu alaikum. Good morning. Welcome to another lesson for A-level media studies. And like we did in the last time, we learned about camera work, movement, shots, and angles, and we explored different aspects. Now, moving on to editing terminologies and why are we learning all these things? Because, like I told you in the exam, we would be played a video clip, preferably from some season, they call it Hollywood drama. And from that 2 or 3 minute clip, we would be expected by Cambridge to analyze it in terms of camera work, in terms of lighting, in terms of sound, acting, and in terms of editing. So we are going to explore different styles of editing today, and then we will later on learn to analyze a clip uh, on the basis of editing. So first of all, let's move on with the continuity editing. What is that thing? In one scene, there are multiple shots, and in one shot, there can be multiple takes and there can be multiple cuts. So, uh, obviously, mostly the projects are not done in a continuous way. There are a lot of changes in lenses, change of location, change of actors, a lot of change usually changes are going on. But still, if footage or a clip seems to be continuous, like things are happening on after the other, chronologically order में चीजें हो रही हैं, so then it's called continuity editing. मसलन उसमें बड़े jumps नहीं आ रहे हैं. Normally movies में they try directors and editors कि एक continuity चले. इसके कॉन्ट्ररी चीज होती है नॉन कंटिन्यूटी एडिटिंग, जिसमें इंटेंशनली वो ऑडियंस को जंप फील करवाना चाहते हैं बाय एडिंग फ्लैशबैक्स और फ्लैश फॉरवर्ड्स. आपको तो कंटिन्यूटी जंप हो जाती है, चेंज हो जाती है, या बाय इवन राइटिंग के 5 years लेटर कुछ इस तरीके से, मे बी बाय एडिंग सम टाइम लैप्सेस. तो दैट इज कॉल्ड नॉन कंटिन्यूटी एडिटिंग. अच्छा, उसके बाद मूविंग ऑन, द फर्स्ट थिंग जो यूजुअली एडिटिंग में की जाती है वो कट यूज़ किया जाता है. कट एक ट्रांजिशन भी है और इसके बहुत से पर्पस भी हैं, और हर एडिटिंग टूल में कट अवेलेबल होता है, चाहे वो विंडोज़ मूवी मेकर है, चाहे वो फाइनल कट प्रो है, या एडोबी प्रीमियर प्रो है, या सोनी वेगस है, या दुनिया का कोई भी टूल है, उसमें कट की ऑप्शन होती है. और एडोबी प्रीमियर में वो ब्लेड या रेजर ब्लेड का साइन होता है, इसके थ्रू हम कट लगाते हैं. बट यहाँ पे हम टूल के एस्पेक्ट से एक्सप्लोर नहीं करें, रादर हम एज अ टेक्निक एक्सप्लोर करें कि एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड हाउ इट कैन हेल्प. सो ये एक ट्रांजिशन है, इसके बहुत से पर्पस हैं. एक लेंथी शॉट की ड्यूरेशन को शॉर्ट कम करना भी एक पर्पस हो सकता है, अनवांटेड पार्ट को निकालना भी एक पर्पस हो सकता है, और सेम सीन को, एक ऑनगोइंग सीन को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से शो करना, उसके लिए भी हम कट लगा के नेक्स्ट सीन वहाँ पे या नेक्स्ट शॉट जोड़ते हैं. सो कट मेजर पर्पस ये है. बाकी हैंड आउट आपको मिल जाएगा, यू कैन फर्दर एक्सप्लोर इट. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट एंड रिवर्स शॉट. इसलिए आई एम गोइंग टू शो यू सम वीडियोस फॉर हेल्प. पहले वीडियो देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दिस थ्योरी थिंग. And here we go. Let's move on. This is actually here we go. Hi, my name is Tony, and this is Every Frame a Painting. The most basic thing we have in film grammar is probably this: shot, reverse shot. Nearly everything you watch is going to be Nearly everything you watch is going to be filled with it, and most filmmakers seem to use it as a quick way to record dialogue. Keep the actors still, use multiple cameras, shoot 10 takes, and then make decisions in post. But I think shot reverse shot is still powerful when it's done precisely. And a good example of that is the work of Joel and Ethan Coen. We thought you was a toad. Because the Coens are masters of the dialogue scene, and they've done it by keeping their shots simple but precise. Can I share something with you? So today, let's reconsider shot reverse shot. What can we learn from the way the Coens use it? But let me ask you a question.
Would an imbecile come up with this? One of the first things you notice about the Coens is that they like to film dialogue from inside the space of the conversation. And that means the camera is usually in between the two characters, so that they each get separate shots. Do I make myself clear? In other words, they shoot a lot of singles. I'm sorry, I wasn't listening. Other filmmakers, like Paul Greengrass, prefer the camera behind the characters, usually on a very long lens, so you feel like you're spying. I want to know what happened. What happened? Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap. The Coens and Roger Deakins don't do this. In fact, they film almost exclusively on wide lenses. Well, I've got a very strong feeling about lenses, and personally, I'm sitting here talking to you, and you're filming me from over there on a shoulder and probably a single, where I'd rarely do that, because I think, you know, the camera wants to be, to me, I would shoot singles inside here. And if you do this, switch to a wider lens and bring the camera closer, it feels like... It's different, right? You know, it's a sense of presence. You're right there with somebody supposed to being... I think psychologically it's a totally different effect, so... But what is the psychological effect? If a long lens feels like you're spying, then how does this lens make you feel? Look, something is very wrong. I don't want Santana Abraxas. I've just been in a terrible auto accident. I would say it's two feelings. Kind of uncomfortable, and kind of funny. And it fits. Because the Coens like to isolate individuals, trapping them in situations that they really have no control over. And because the lens is right here... Now, we had a deal here. A deal's a deal. Is it, Jerry? You asked those three poor souls up in Brainerd if a deal's a deal. You're trapped with them. The other effect is visual. The Coens shoot mostly on a 27 or 32mm lens, and they often push in to exaggerate some part of an actor's face. Frank Raffo, my brother-in-law, was the principal barber, and man, could he talk. Using wide lenses doesn't just exaggerate the face, it also exaggerates... Well, guys, here we are not talking about lenses, so let's moving back to the main thing. Rather, I think we should move on to the handout part, where we were talking about short and reverse shot. So, normally during dialogue or conversation, the first thing that pops up in front of us, that could be this shot, is called shot, and the other shot that will be placed after that thing is called reverse shot. कुछ बुक ऑथर्स इसको ऐसी शॉट को शॉर्ट, रिवर्स एंड शॉर्ट 3 पीसेस में बोलते हैं, बट ज़्यादा बुक्स हैं जो ऑथर्स हैं वो फर्स्ट शॉट को शॉर्ट बोलते हैं, दूसरी शॉट को रिवर्स शॉट बोलते हैं. इसके और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, जैसे ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आई लाइन मैच, वो हम आगे देखेंगे. बट वन थिंग कैन बी आई लाइन मैच एट द सेम टाइम वो शॉर्ट रिवर्स शॉट भी हो सकती है. जैसे अगर हम कैमरा, ये तो हम एडिटिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? अगर हम कैमरा वर्क की बात करते हैं तो दिस इज ओवर द शोल्डर शॉट, तो ऑब्वियसली वो एट द सेम टाइम बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स रख सकती है. सो शॉर्ट रिवर्स शॉट और यूजुअली दिस थिंग, एंड आई होप दैट थ्रू दैट वीडियो थिंग्स आर प्रीटी क्लियर टू यू नाउ. मूविंग ऑन टू द आई लाइन मैच. आई लाइन मैच भी एडिटिंग में, देखो ये बिफोर एडिटिंग दे वर जस्ट रैंडम शॉट्स, लेकिन कुछ सोच के डायरेक्टर्स एंड सिनेमेटोग्राफर्स पहले से सोच के शूटिंग स्टार्ट करते हैं. बल्कि फिल्म स्कूल्स में सिखाया जाता है, बल्कि वेस्ट में हॉलीवुड में ये बिलीव किया जाता है कि the entire film gets completed even before hitting the record button. यानी वो हमारी पाकिस्तानियों की तरह या नॉर्मल एमेचर्स की तरह वो ये नहीं सोचते कि ठीक है यार शूटिंग स्टार्ट करते वहाँ पे हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, कुछ जुगाड़ कर लेंगे. नॉट लाइक दैट. दे प्री प्लान एवरी सिंगल शॉट ऑफ द फिल्म. जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उस पर बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, प्रोजेक्टर पे प्ले करके जो उन्होंने प्लानिंग की होती है, प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, उस पर वो डिस्कशन करके फाइनलाइज करते हैं, फिर वो शूटिंग की तरफ मूव करते हैं. सो दैट इज वाई उनको शूटिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई हर्डल्स नहीं आती. ऑब्वियसली रेंटल्स भी होते हैं, लोकेशन के रेंट्स भी होते हैं, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम में नहीं आते, बिकॉज दे ऑलवेज कम अप विद अ प्लान. बैकअप्स भी बनाए होते हैं लेकिन वो प्लानिंग के साथ शॉट्स ले रहे होते हैं. सो लेट्स से ऑल दो शॉट्स जो एडिटिंग में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करेंगे वो उससे स्टोरी डेवलप होगी. कहने को तो ये एक शॉट है, ये दूसरी शॉट है, लेकिन इनको एडिटिंग में ऐसे प्लेस किया जा रहा है कि वन थिंग बिकम अ शॉट एंड अदर विल बी कॉल्ड रिवर्स शॉट. मूविंग ऑन, अगेन ये भी एक शॉट है, ये भी एक शॉट है, बट ये आई लाइन मैच इस तरह से है कि फर्स्ट शॉट में हम अपना कैरेक्टर दिखा देते हैं, ठीक है, जो किसी से बात कर रहा है, चाहे वो किसी जो है द अदर पर्सन, द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट व्हाटएवर इज पार्शियली विजिबल और नॉट.
लेकिन we are shown that a girl or a person is looking at somebody. नेक्स्ट शॉट में अगर हम वो somebody भी दिखा दें तो it will be called eye line match. ठीक है, eye line match के ऊपर एक और वीडियो देखते हैं. I hope it will be more clear to you people. Where is eye line match? Just give me a sec. Eye line match को देखते हैं भी. Just here we go. Actually, I have a video in fact. This is for eye line match, and let's do it. Although I've kind of bata diya, but just to further clear your concept, let's have a look. Juliet, it's a 9th grade book, but I figured I could have it done before the school year starts. अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही तो it's not a problem. हमने सिर्फ concept लेना है. First shot में we are shown that a character or a girl is talking to somebody. ठीक है, और ऑटोमेटिकली ऑडियंस चाहेगी कि मुझे वो somebody भी दिखाया जाए जिससे वो बात कर रही है या जिस लैंडस्केप को वो देख रही है, किसी पेंटिंग को देख रही है, तो नेक्स्ट शॉट में वो पेंटिंग भी होनी चाहिए. तो दैट थिंग इज वन वे. ये शॉर्ट रिवर्स शॉट भी होगी, बट ये आई लाइन मैच भी होगी. Juliet, it's a 9th grade book, but I figured I could have it done before the school year starts. So that is eye line match. Doesn't look like Elizabethan tragedy. ठीक है, दोबारा फर्स्ट शॉट दिखाया कि a character is talking to somebody, और जब वो somebody दिखा दिया this guy, तो ये eye line match हो गया. Second इस example में, that's why I chose this example. This guy is looking at something, and audience और उसके बारे में बात भी कर रहा है, और audience would like to see as part of the story कि वो क्या है, और वो ये चीज जिसके बारे में बात हो रही थी. Got it? I hope now it's pretty clear to you. Let's move back to the handout. उसके बाद ग्राफिक मैच पे मैंने आपको क्लास में एक वीडियो भी दिखाई थी, लेकिन मैं आई वोंट स्पेंड दैट मच टाइम टुडे ऑन ग्राफिक मैच. तो आपको जस्ट बता देता हूँ, बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है. इन दिस शॉर्ट, पिछली शॉट में आपको ग्राफिकल ऑब्जेक्ट नजर आए. लेट्स से एक विंडो दिखाई है, बिल्डिंग भी रेक्टेंगुलर है और उसकी विंडो भी रेक्टेंगुलर है. अब नेक्स्ट शॉट में अगर हम कोई और रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दिखा देंगे तो हम इसको ग्राफिक मैच कह सकते हैं. मूवीज में दिखाया जाता है, कुछ मूवीज में, कि हीरो बचपन से बड़ा हो रहा है, तो बचपन में वो साइकिल चला रहा है, तो उसके साइकिल के जो व्हील पे वो फोकस करता है कैमरा, और वो साइकिल चलते चलते नेक्स्ट शॉट में एकदम वो गाड़ी का व्हील बन जाता है, वो फरारी चला रहा है, इट्स ग्रोन अप गाय मे बी. तो वो भी ग्राफिक मैच की कैटेगरी में फॉल करेगा. ये बातें आपको मिल जाएंगी हैंड आउट से. तो लेट्स मूव ऑन. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्शन मैच थिंग. एक्शन मैच जो है, हम मल्टीपल शॉट्स लेते हैं. 2-3 बातें कही जाती हैं कि अगर आपने स्टोरी की पेस को आगे लेके चलना है तो नॉर्मली आप कटिंग ऑन एक्शन करें. ठीक है, यानी एक्शन वाली शॉट से अगली शॉट भी एक्शन वाली होनी चाहिए. अगर एक स्टैटिक और स्टिल शॉट है तो अगली शॉट भी स्टिल होनी चाहिए. एक तो प्रैक्टिस ये है. ठीक है, ये इतना विजुअली अच्छा लगता है, कोई रूल नहीं है, इट्स विजुअली रिकमेंडेड थिंग. अच्छा, लेकिन ये बात और है, जो बात यहाँ पे लिखी जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज लिटिल डिफरेंट थिंग. इसका भी आपने ख्याल रखना, एंड इट इज एक्चुअली एक्शन मैच. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्शन आप लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हो, जैसे मैंने क्लास में भी आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स से एक क्लासरूम का सीन है जिसमें एक बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है और टीचर उसको पहले वार्न करता है, दोबारा वो बच्चा यूज करता है, अब टीचर उसको लॉन्ग शॉट में, अब इमेजिन करो इट्स अ लॉन्ग शॉट, उस शॉट में पूरी क्लास नजर आ रही है, इट्स अ वाइड शॉट, राइट. अब वो टीचर उस बच्चे को लेट्स से कहता है स्टैंड अप. अब वो बच्चा खड़ा हो गया, टीचर अपनी डायरी निकालता है, कोई वार्निंग स्लिप निकालता है, उसको साइन करता है और उसको कहता है टेक इट एंड गेट आउट. लेट्स से ये लॉन्ग शॉट है. अब ये एक ही कंटिन्यूटी में लॉन्ग शॉट में दिखाएंगे तो इट विल लुक वेरी एमेचर, बोरिंग एंड नॉट सो गुड. तब इस एक सीन को हमने मल्टीपल शॉट्स में ब्रेकअप करना है, मल्टीपल टेक्निक से ब्रेक डाउन करना है. फॉर एग्जाम्पल, जब टीचर ने लॉन्ग शॉट में उसको कहा कि स्टैंड अप, अब आप उस स्टूडेंट का क्लोजअप दिखा दोगे कि वो खड़ा हो रहा है, मे बी उसकी मिड शॉट, लेकिन मिड शॉट में आप उसको एक दफा शूट करने से पहले बिठाओगे, उसी कहोगे एक्शन, अब दोबारा खड़े हो. अब जो वो खड़ा हो जाएगा तो लॉन्ग शॉट में जब वो दिखा रहे थे कि खड़ा हो रहा है, तो एकदम शॉर्ट जो क्लोजअप लगाएंगे उसमें भी वो खड़ा मिड वे से खड़ा हो रहा होगा. आई होप शायद यू कैन विजुअलाइज बेटर. अदरवाइज आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, आपको वहां से बेहतर कंफर्म हो जाएगा. सो लेट्स रैप इट अप हियर टुडे. और यहाँ आज का जो एजेंडा है मेजरली ग्राफिक मैच और आईलाइन मैच तक था. नेक्स्ट वीडियो में आई विल फर्दर क्लियर इट फॉर यू पीपल. ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज.